start with chapter number 2, natural resources. What are natural resources? Natural resources are the resources that are found in nature, right? So first is land resource. Land क्या एक invaluable natural resource है जो essential है for human existence. It is significant and it is diverse use, pressing issue of land degradation. Land serve as a foundation of our life. ये आपको habitat provide करता है, natural vegetation and wildlife. All economic activities they are grounded in land as it caters to various needs. Right? We have 30% of Earth's surface, right, and 90% of global population that inhabits 30% of its land. Next is land use. So land, it is multifaceted utility. If we talk about physical factors, then human factor, land is classified beyond its use, private land and community land. फिजिकल फैक्टर्स में आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब आ जाते हैं. ह्यूमन फैक्टर्स में आपके इकोनॉमिक, कल्चर, ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस होते हैं, वॉन्ट्स होते हैं. लैंड यूज को हमने कैटेगराइज करा है 2 पार्ट्स में, प्राइवेट और कम्युनिटी. प्राइवेट ओन बाय इंडिविजुअल जो अपना होता है, कम्युनिटी जो कलेक्टिवली होता है, पूरी एक, इट इज टिपिकली लाइक इट इज लाइक अ फोडर कलेक्शन, या कोई मेडिकल हब हो गया, कैटल रियरिंग हो गया, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है. Land degradation. It pertains to any detrimental alteration in land quality, leading to reduction in its overall condition and productivity. So, growth of human population and their resource demand compared with human activity that has intensified the pressure on available land resources. This leading to further land damage. Several human activity contribute to land degradation, like deforestation. ये किसको contribute करता है? Soil erosion, overgrazing by livestock, mining and quarrying, encroachment on agriculture, increased soil salinity, alkalinity, discharge of toxic industrial influence, desertification characterized by desert, expansion due to population pressure, deforestation and industrialization and urbanization. Next is conservation of degraded land. Afforestation means planting of tree, regulation of chemical pesticide, land reclamation, oversight or overgrazing, control of mining activities, proper treatment or disposal of industrial effluent, monitoring and controlling urban expansion, establishment of settler bed, stabilization of sand dunes. Right? Next is soil. Soil क्या है? It is a vital component on earth's surface. ये thin layer है जो loose material की बनी होती है. Right? It is breakdown of rock. Soil is essential for the growth of plants and sustenance of animals. It was dealt with the formation factors affecting soil, soil erosion उसके causes. Right? Now formation of soil. Soil does not appear overnight. It takes millions of years. So we have several factors जो आपके soil formation को influence करते हैं. First is parent role. ठीक है, it originate, उसका जो effect है, color, texture, उसकी chemical property, mineral content, ये सबको दिखाता है. Climate, rainfall, temperature, humidity, सब किसका part है? Climate का. और ये किसको influence करता है? Soil formation. Natural vegetation में आपका humus आ जाता है. That is need for the soil increase the fertility, relief और topography, मतलब जो altitude है, slope है, वो भी आपके soil formation में help करता है. Now soil erosion. What is soil? It is a crucial natural resource for both, चाहे वो human हो चाहे वो environment, दोनों के लिए क्या है? एक crucial resource है. So what are the causes? That is deforestation, मतलब आप trees को remove कर रहे हो. Next is faulty farming method, आप plowing land को properly plow नहीं कर रहे हो, गलत methods का use कर रहे हो, जिससे क्या होगा? सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है. फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न, रिपीटेडली आप सेम क्रॉप को ही ग्रो कर रहे हो लैंड पे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब आप प्रैक्टिस इन रीजन इन्वॉल्विंग क्लियरिंग फॉरेस्ट इन एग्रीकल्चर. अदर ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर कुछ नेचुरल फोर्सेज, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, ग्लेशियर पिघल के गिर गया. ठीक है, वाटर जो है नेचुरली सॉइल को इरोड कर देता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है. राइट? नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. हाउ यू कैन कंजर्व द सॉइल? बाय एफोरेस्टेशन, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करें. कॉन्टर, मतलब आप स्लोपिंग टेरेन में आप क्रॉप्स को प्लांट करें. क्रॉप रोटेशन, मतलब सेम लैंड को बार बार यूज करें, मतलब एक बार कोई और सा क्रॉप उगाए, दूसरी बार दूसरा उगाए. टेरेस क्रिएटिंग, लाइक फ्लैट सरफेस हो, स्टीप स्लोप हो, जो फार्मिंग को क्या करना है? मिनिमाइज करता है. बडिंग, शेल्टर बेड्स, ठीक है, मतलब आप प्लांट करो ट्रीज को बेल्स में. राइट? कोस्टल एरिया और ड्राई एरियाज में हम ब्लॉक कर देते हैं. मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, मतलब आप डिफरेंट क्रॉप्स को एक अल्टरनेटिव रोज में क्रॉप करो. स्ट्रिप क्रॉपिंग, मतलब आप डिवाइड करो लार्ज फील्ड को, ऐसा होता है ना, स्ट्रिप्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है. आप उसकी क्रॉपिंग को भी कर सकते हो, इसको कंजर्व करो. ओवर ग्रेजिंग, मतलब चेक करो कि जो एनिमल्स है वो ओवर ग्रेजिंग तो नहीं.
Now, water resources. It is vital renewable resource that play a fundamental role in sustaining our life. एक diverse purpose है, like it is used for drinking, recreational activities, bathing, and fisheries, temperature regulation, and cleaning. So, what are the characteristics of water? It is most widespread substance. ये 71% of the earth surface को क्या करता है, cover करता है. It is approximately 3.5 billion year ago. Water exists naturally in 3 states: solid, liquid और gas. तीनों स्टेट में होता है. ये एक renewable resource है that is replenished by hydrological cycle. It is endowed with abundant water resource. It is host to diverse plant and marine life. Now, distribution of water. So, our planet is often refers to as water planet or blue planet. 70% जो है वो आपका ocean है, 97.5% world का water. Remaining 2.5% क्या है, fresh water, which is characterized on the basis of its location. Right? It primarily comes on the surface or runoff in lakes and rivers, as groundwater is constantly replenished through hydrological cycle. आपकी hydrological cycle की वजह से वो क्या हो रहा है, replenished हो. Now, challenges in water availability. Water क्या है, आपका renewable resource है. Availability of fresh water remains relatively constant, so it cannot be created or removed. The world faces significant challenge in ensuring equitable access to clean and sufficient water. Challenge क्या है, we have various factors like rising global population. देखो क्या हो रहा है, day by day जो population है वो rise कर रही है. So with the help of that, what happens, जो water source है वो persist कर रहे हैं, right? Disparities in access to water shift towards. लोग क्या कर रहे हैं, cash crop की तरफ shift कर रहे हैं, and what they are using, fertilizer, HYV seeds का use कर रहे हैं, right? Expanding urban area demand by जो more water for more diverse purpose. Contemporary living pattern, variation in seasonal or annual precipitation. Now we have water pollution. So water pollution entails the contamination of water by external substance, rendering it unsuitable for various use. It stems from domestic to industrial waste. Now, natural vegetation and wildlife. The earth comprises 3 essential reliefs: land, water and air. ये interact करते हैं और ये क्या create करते हैं, जब आपके land, lithosphere, एटमॉस्फेयर और आपका हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पे ये इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे मिलता है, दिस वन पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर. वी कॉल इट बायोस्फेयर, राइट? सो इट इज बायोटिक कंपोनेंट, coexists and interact with each other in the physical environment. So we can say that natural vegetation represent a collection of plant species that are living together with a specified environment. It encompassing the term include trees, shrubs, plants, and grasses. Our planet hosts a remarkable array of life forms, leading to extensive biodiversity. Now let's study about ecosystem. So we can say that it has 2 major types: aquatic ecosystem और terrestrial. Aquatic में आपका fresh water और marine दोनों आता है. Fresh water में आपके क्या जाएंगे, lake, ponds, streams, marshes and bogs. Marine में आपके ocean, estuaries और coral. If we talk about terrestrial, terrestrial मतलब land वाला जो हो गया आपका, जिसमें आपके totality of plants, animal species with specific condition. They are categorized as follow, like forest, grassland, deserts and tundra. Forest एक tree dominated landscape है, is associated with water resource. इनको हमने evergreen और deciduous में divide करा है on the leaf shedding pattern. Then we have grassland, characterized by expanses of grasses interspersed with scattered trees and shrubs. इनको हम साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और स्टेप्स इन यूरेशिया. डेजर्ट 1/5 of the earthland can face challenge of humidity. यहाँ पे less than 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, राइट? टुंड्रा की अगर हम बात करें, दे आर फाउंड इन कोल्ड पोलर रीजन. यहाँ पे मेनली क्या होता है, मॉसेस होते हैं और लीचिंग्स होते हैं. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो इफ वी टॉक अबाउट, ये प्रोवाइड करता है टिम्बर रिसोर्स, शेल्टर टू एनिमल, एयर क्वालिटी को, ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स को इनहेंस करता है, प्रोटेक्ट सॉइल, acting as shelter bell, groundwater storage, supply fuel, fodder, manure, and medical herbs, gums, resin, natural dye. Now wildlife आपके animal species होते हैं, birds होते हैं, reptiles होते हैं, insects होते हैं, marine life होते हैं. इनका contribution क्या है? Providing drought power and transportation, supplying milk, meat, egg, hides and wool, serving as source of nutritive food. Insects like bees contribute to honey. ये जो आपके insects है, ये vital role play करते हैं in fruit and flower pollination. It is assist in controlling harmful insect population. It consume insect. Vulture and crows होते हैं, ये क्या होता है, scavengers होते हैं.
इनको हम क्लीनर ऑफ द एनवायरमेंट भी बोलते हैं. Why? Because they clean the environment. Now distribution in ecosystem. In intricate a web of life. Every plant and animal species इनका अपना अपना क्या होता है, significant role होता है. So we have factors like natural factor like climate change, tsunami coupled with human interference resulted in the loss of natural habitat of countless plants and animals. So we have several key factors that accelerated, like the large scale removal of forest, right? Massive infrastructure development, extraction of mineral from the earth crust, unplanned construction activities, expansion of farmland, practice geared towards maximizing, आप क्या कर सकते हो, टिम्बर की जो प्रोडक्शन उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो. डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जैसे भाई आप डिस्टर्ब कर रहे हो लाइफ ऑफ काउंटलेस स्पीशीज. इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, chemical and industrial waste, uncontrolled fires and ravage, and unequal distribution and consumption of resources. क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है environment. A general disregard for the environment, right? Next is conservation of natural vegetation and wildlife. How you will conserve? We have different strategies like establishment of protective area. हम जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर्स को क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे. प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज जैसे क्रीक्स, लेक्स और आपके वेटलैंड्स हो गए जो वाइटल इकोसिस्टम है. सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम से वन महोत्सव जस्ट रेज करेगा अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन. इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज जैसे आपका मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन भी. रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक आपका बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य, ये किसके ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिस करता है. स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, टारगेटेड प्रोजेक्ट है लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल, राइट. नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन लाइक इनेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें लॉयन, टाइगर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब प्रोटेक्टेड, आप इनको मार नहीं सकते, हंट नहीं कर सकते. इंटरनेशनल एफर्ट जैसे साइट्स हो गई, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species. आप देखेंगे about 35,000 species are protected under this treaty. We have Sundarban in West Bengal, Nanda Devi in उत्तराखंड, ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है. नीलगिरी इन तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, नोक्रेक मेघालय, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमार्ची मध्य प्रदेश, ग्रेट निकोबार अंडमान, अचनकमर अमरकंटक छत्तीसगढ़, अगस्त्यमलाई केरला, कंचनजंगा सिक्किम, मानस कंच कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में है, सिस्टुलाम हिमाचल प्रदेश, right? These are Andhra Pradesh. These are the different biosphere reserve that you have to learn and keep in mind, right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.